Hey, what is up guys? So this is the video about camera comparison between Xiaomi Mi A1 and Redmi Note 5 Pro. So basically this is a quick thing comparison. So without wasting time, let's get started. So guys, this is the Xiaomi Mi A1 which recently got launched, and I would say it was one of the amazing smartphone in camera department. And this is the Redmi Note 5 Pro which just got launched in India, and this is right now the beast in 15,000 budget. So I'll be comparing these two smartphones, what basically features are, and both of these smartphones offer a good price range, price value, camera and everything. And what I'll say about these smartphones, these both are great smartphones, but right now the display is the major factor and the camera is the major factor. The Redmi Note 5 Pro has good camera lighting, good focus, good depth, and on Mi A1 you will get some, you know, that warm side, that color saturation thing, and the depth of field is slightly better in Mi A1. In Redmi Note 5 Pro, the pixels are arranged in a very good manner. You can see there is no blurriness or something if you see the complete photo. And if you talk about options and videography thing, then you have 4K right now in Mi A1, you don't have 4K right now in Redmi Note 5 Pro, and you have 18:9 display ratio in Redmi Note 5 Pro, and you don't have the 18:9 display ratio in Mi A1. So these are some differentiation things in between these smartphones, and definitely the low light photography on Redmi Note 5 Pro is way better than Mi A1. So I would say Redmi Note 5 Pro is a better pick on behalf of this comparison. And the other thing is the autofocus on Mi A1 is way better than Redmi Note 5 Pro, and I would hope that Xiaomi will push an update to fix this autofocus thing. And for now these both phones are good, but Redmi Note 5 Pro is still the best in camera department as per this comparison. And here are my samples what I have seen in these smartphones. Like, this is the thing that I would pick if I choosing a camera smartphone. And here is my video what I thought about this. It's a front camera sample. Just enjoy this guys. Hey guys, what is up? So ये दोनों कैमरास का फ्रंट सैंपल है, एक साथ तुम देख सकते हो. लेफ्ट में मेरे पास Mi A1 और राइट में मेरे पास Note 5 Pro है. पता नहीं मैं जीता हूँ, बट here is the quick sample for you guys. और अगर रिव्यू के हिसाब से बात करूँ तो Note 5 Pro में ज़्यादा बेटर कलर प्रोडक्शन हो रहा है, बेटर सेल्फी है Mi A1 के कंपैरिजन में. तो डेफिनेटली Note 5 Pro इज़ अ पिक. एंड अगर शेडो वगैरह कलर्स के साथ बात करूँ तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थिंग. एंड राइट नाउ मैं डायरेक्ट सनलाइट में हूँ, एंड फ्रंट में थोड़ा ऐसा फील हो रहा है लाइक सारी चीज़ें पीछे पीछे भाग रही हैं. एंड Mi A हमारे पास थोड़े कलर ज़्यादा बेटर आ रहे हैं, एंड Note 5 Pro में तुम्हारे पास ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा बेटर है. सो आई वुड से इट्स अ ग्रेट थिंग दोनों चीज़ों में. एंड थैंक यू सो मच गाइस. ये है डायरेक्ट पार्क का टेस्ट इन दोनों फोन्स के साथ. सो गाइस, राइट नाउ मेरे पास लेफ्ट में Mi A1 है और राइट में Redmi Note 5 Pro है, जिसमें एक में EIS स्टेबलाइज कर रखी है, इसमें करनी बाकी है. तो अगर मैं इसके कंपैरिजन की बात करूँ तो वीडियो में Mi A1 में थोड़ा सा वार्म क्वालिटी थोड़ा है, और Redmi Note 5 जो पूरा बड़ा स्मूथली चल रहा है. लाइक इट्स फीलिंग यार एकदम मक्खन की तरह. और वहीं सेम इसमें हिल रहा है अगर बात करो तो. और अगर हम बात करें, इस पर क्लिक करना पड़ रहा है, और इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो लगभग ठीक है. फॉर मी अगर वीडियो टेस्ट की बात करूँ तो Redmi Note 5 Pro का कैमरा ज़्यादा बेटर लगा मेरे को इस मामले में. एंड Mi A1 का जो कैमरा है वो थोड़ा बहुत होम कलर ज़्यादा दे रहा है. बट अगर कलर्स की मैं बात करूँ तो जो हमारे पास Mi A1 है उसमें ये कलर्स ज़्यादा सही से दिख रहे हैं, और जो Redmi Note 5 Pro है उसके अंदर थोड़े कलर्स थोड़े अजीब से आ रहे हैं. अगर स्टेबलाइजेशन के साथ बात करूँ, स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी गुड Mi A1 में, डैम अमेजिंग अगर स्टेबलाइजेशन की हो तो. Thank you so much guys for watching this comparison, and I'll see you in my next one. Till then, take care guys, peace out.